इस बार जो ये in fact, I'll answer what I'll just extend this question, your earlier question. As Manoj ji said कि हम लोग सब अलग-अलग काम करते हैं और हम लोग की सबकी एक earnings है. लेकिन genuinely मनोज सर, मैं उनको मनोज सर कहता हूँ, वो अपनी इंडस्ट्री के राजा हैं और बच्चे से लेके बूढ़े उनकी फिल्में देखते हैं. When you see a guy like Manoj Tiwari on the field, ये मैं सबको कहता हूँ, he's an actor and he's an athlete. It's the best example you can give children. आज जो भी बच्चा स्पोर्ट्स में घुसेगा, वो गलत चीज़ों से दूर रहता है. तो आप जो कह रहे थे, we play on weekends, जहाँ संसद इतना फंक्शन नहीं करता, and he comes, he gives his sweat and blood so that his fans' children can see an actor. You know, he is the only actor जिससे हमें डर लगता है. When he comes to bowl, he's like a bull. ये आके bowling करते, he bowls all his 4 overs, he comes and he opens. इन्होंने 2 innings from the first over to the 20th over खेला है. और मैं सही में समझता हूँ क्या, you know, cricket fit is something else. I play a lot of football, but when you're playing cricket, the concentration is very high. So when you say about क्या आपका ध्यान देश में रहेगा, इनका ध्यान हमेशा देश पे रहता है. It can be on the field or off the field, because I genuinely believe that beyond what he does, the only other way to influence kids to stay away from the vices is to play a certain sport. And that's what got me and Anna very attached. I remember my first film as an assistant, Anna was a hero. And we didn't get along because we came from a film industry or film family. We got along because we believed in health. And even getting involved in CCL was something that we just want to be a part of some organization, a sport where we can promote it. We can have kids follow us. We can have, take out any kind of, because discipline, sports brings discipline. So I'm very glad that you asked Manoj sir this question and I extended the answer, because I think it is beautiful what he is doing. I am also happy, Shweta, कि आपके कारण मुझे पता चल गया सोहेल सारी. लेकिन एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आप सबसे कि बहुत सारे अभी सैटेलाइट टेलीविज़न पे बहुत सारे लीग्स बन रहे हैं, चाहे टेनिस है, फुटबॉल है, अब तो कबड्डी भी इतना लोकप्रिय हो गया जितना सोचा नहीं गया था. इस तरह आप कोई एक क्रिकेट के प्रति दीवानगी कम होते देखते हैं, या क्रिकेट अब से बढ़कर नए नए चीज़ों को लोग ज़्यादा झुकाव दे रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि आप एक टीम में सिर्फ हमारे देश के लिए 11 लोग खेल सकते हैं. तो और अभी एक अमेरिका में एक साइंस है जो वो आपकी बॉडी स्टडी करती है और कहती है कि ये आपको खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए. यू आर फिजिकली फिट फॉर अ सर्टेन स्पोर्ट. जैसे कि मेरा बेटा जो है वो नेचुरली उसके फ्लेयर है स्विमिंग करने के लिए. सो आई सपोज दैट द मोर स्पोर्ट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड और द मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एथलीट्स. हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि अगर आप क्रिकेटर हो तो आप एथलीट हो. नहीं, you can be a football athlete. Now I'm so glad that the football league has started, kabaddi league has started, tennis has started, because there are a lot of kids who are very talented but who don't get the platform just because they don't play cricket. हाँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, अन्ना को क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन हमको बाकी के स्पोर्ट्स देखना ही बहुत पसंद है. And you just have to be a good athlete. And genuinely now I wish there's swimming tournaments that are being held. Hockey comes back into our life, and it is only awareness. मैं हमेशा कहता हूँ कि as even Vishnu sir said that पहले हमको अपने पाँव पे खड़ा होना था, then we could have supported 100 kids. On the 5th season, we genuinely believe that we have our standing as CCL, and now we can do some good work. So encouraging all kind of sports. In fact, I even told this to Vishnu sir that once we establish ourselves in cricket, let's start a football league. When Jan Feb we play cricket,
and then in probably in June, July, we play football because half of the team plays football, and it's just a weekend sport. Anything that you can generate awareness through media, through publicity, I think it's a good thing. So, coming back to your question was